So very warm welcome to everyone and welcome all to today's session. I'm sure my voice is audible. Just type yes on the chat box if my voice is audible. अगर मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं and screen visible है, so just type yes on the chat box. Thank you so much for the confirmation. So today is Nifty 50 weekly option expiry एंड आज हम लोग निफ्टी 50 वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, क्या चार्ट्स दिखा रहा है एंड कौन कौन से स्टॉक्स अभी तेजी पे लग रहे हैं या फिर मंदी पे हैं एंड बेसिस ऑन दैट आई मींस लाइक कौन से सेक्टर्स आज थोड़ा वॉलेटाइल पे हैं. Now talking about the Nifty 50, first of all, like since two previous sessions, Nifty is quite volatile, I would say. But आज की जो बात करें, that is Nifty 50 is trading around today is 23,220. High was 23,246. The low currently it is at 23,217. Now the Bank Nifty it is at this 48,594. The open was 48,770. And the high was 48,892 and the low is 48,493. तो मोटा मोटा देखी जाए तो एक 400-500 पॉइंट्स का मोमेंट है बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी 50 में अगर वही मोमेंट्स अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट्स का भी आज थोड़ा मोमेंट मिला है. जो अपना लो है उसका 23,100 एंड 23,200 अपना अभी चल रहा है 23,200. नाउ in front of your screen there is the Nifty 50 weekly options this research list report. They have published it. Increase of 0.8% in price with an increment of 13.5% in open interest, indicating a short build-up. Now current week expiry as per the data of the Nifty 50, the call side has been noted as 23,300 followed by 23,500 and 24,400 which may act as the immediate resistance. Okay. And on the put side it is observed on the 23,000 and 22,900 which may act as a support levels. Now यहाँ पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी एक्सपायरी का बैंक निफ्टी अभी अपनी मंथली एक्सपायरी है, सो बैंक निफ्टी का भी ओआई डेटा यहाँ पे पूरा दे रखा हुआ है. बट आई वुड लाइक माय रिसर्च एनालिस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट लाइक द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कि क्या आज दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में एंड दिस निफ्टी 50 में. नाउ नेक्स्ट वीक का ये जो एक्सपायरी है दैट इज ऑफ निफ्टी 50 बिकॉज दैट विल बी दिस मंथली एक्सपायरी ऑफ इंटायर जैन विल बी द मंथली एक्सपायरी एंड मॉडरेटली अपना बुलिश दे रखा है दैट इज अपना बुल कॉल स्प्रेड आवर रिसर्च एनालिस्ट हैव सजेस्टेड. So bull call spread करने के लिए the strategy for the week of 30th January is buy call of 23,150 in the range of 190 and 210 and sell it at 23,350 with the range of 125 and 135. So the risk will be this for the one lot that is minus 5,400 and the reward is 9,600. So you have to maintain with your stop losses and the risk price that how much you are like the risk like you are looking out for. Now ये एक बुल कॉल स्प्रेड है एंड बुल कॉल स्प्रेड ऑलरेडी हम लोगों ने पे भी कि बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है या बेयर कॉल स्प्रेड क्या होता है या फिर पुट स्प्रेड क्या होता है. स्प्रेड एक तरह की स्ट्रेटेजी होती है जहां पे यू बाय द कॉल एंड ऑल्सो सेल द कॉल ऑल्सो. सो द मार्जिन इज रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली दैट इज अप टू लाइक 25 to 40,000 में इसका काम हो जाता है. बट अगर आप नेकेड सेल करते हैं या नेकेड अपना दिस कॉल सेल करते हैं सो वहां पे एटलीस्ट आई मीन 70 to 80 या 1 लाख तक का मार्जिन लगता है. सेम साइमल्टेनियसली इफ आई गो विद द कॉल बाय और द पुट बाय देन नॉर्मली लाइक मुझे प्रीमियम के हिसाब से पे करना पड़ता है. Now with this I'll hand over my session to Mr. Karan Pai who is a research analyst and who will going to give you the view on the Nifty 50 expiry followed by the next week expiry क्या लग रहा है followed by the support and resistance और आज intraday levels पे क्या लग रहा है. So Karan, all over to you now. Thank you Rohit, thank you for the introduction and जैसे आपने कहा कि पिछले कई दिनों में the Nifty has been super volatile and ये एक ऐसा फेस रहा है जहाँ पे इंट्राडे वी हैव सीन सच मैसिव मूव्स कि समथिंग दैट आई हैव विटनेस प्रॉबली ड्यूरिंग द कोविड फेज जब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था. एंड दिस मूव अगर आप देखोगे इट इज नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डायरेक्शनल. सो आई जस्ट टेल यू व्हाट आई एम लुकिंग अहेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये जो कैंडल है दैट इज 21st Jan की विच वॉज अ ट्यूसडे, करेक्ट, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ मारू बोजू. अभी इसे मारू बोजू इनवेरिएबली इज
अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। एंड अगर आप इसमें देखोगे विक्स का साइज जो होता है ऊपर एंड नीचे का, दे आर वेरी इनसिग्निफिकेंट व्हेन यू कंपेयर इट टू द साइज ऑफ द रियल बॉडी। एंड अनदर थिंग, ये मारू बोजू अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसने पिछले तकरीबन 6-7 दिनों का मूव जो है वो एक ही सिंगल सेशन में कवर कर दिया था। सो इफ यू सी ऑन 13th of Jan, जो क्लोज था इंडेक्स का, दैट वाज अराउंड 23,085। एंड फ्राइडे सॉरी उसके फॉलोइंग मंडे का, दैट इज 20th Jan का, अगर आप देखोगे क्लोज था 23,344। एंड ये कैंडल ने वो बीच में जितनी भी मूव्स हुई थी, अप डाउन साइडवेज वट एवर इट वॉज, इट हैज कम्प्लीटली कवर्ड इट, कम्प्लीटली एनगल्फ्ड इट, बिकॉज इतना बड़ा कैंडल बना है कि पिछले 7 सेशंस का मूव उसने एक ही कैंडल में खत्म किया। ना मारूबोजू का सिग्निफिकेंस ऐसा है कि यू उसके जो हाइज और लोज हैं, दे बिकम वेरी क्रूशियल लेवल्स गोइंग अहेड, बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग कैंडल, यहाँ से काफ़ी अच्छी सेलिंग प्रेशर आई थी, एंड देन यहाँ पर देयर इज अ बिट ऑफ हॉल्ट इन द सेलिंग। So, going by that logic, the highs and the lows of that particular Marubozu candle, they become very crucial. So, यहाँ पर अगर आप देखोगे लो जो था तकरीबन 23,000 के आसपास था एंड सम चेंज, so I'll round it off to 23,000. It was 22,980 to be very precise. एंड अगर आप हाई देखोगे उस दिन का था 23,426. सो ये जो हाई है 23,400 का, एंड जो लो है तकरीबन 23,000 का, प्लस माइनस गिव अवे हियर एंड देयर, ये जो रेंज है ये काफी क्रूशल होने वाला आने वाले टाइम में। एंड अदर देन दैट, अगर आप देखोगे 24,400 का सिग्निफिकेंस इतना क्यों है, सो यहाँ पर से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, वो उसने ब्रेक किया था विद अ गैप, इट इज काइंड ऑफ लाइक अ मल्टीपल टच पॉइंट लेवल, एंड अ बिट ऑफ काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि काफी टाइम वो प्राइस वहां पर टच होकर घूम गया था। All those levels, they come together at around 23,400, 23,500. So that on a larger time frame matlab when I'm looking at a bigger picture here, that becomes my resistance. एंड 23,000 का सिग्निफिकेंस, ऑफ कोर्स ये मारूबोजू का लो था, ये अगर मैं सो दिस इज बेसिकली वेज लाइक कैंडल पैटर्न, सॉरी वेज लाइक चार्ट पैटर्न। उसका एक नीचे का जो ट्रेंड लाइन है वो तकरीबन आ रहा है 22,900 में, एंड 23,000 इज ऑल्सो अ राउंड फिगर। सो राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल्स उसका जो है सिग्निफिकेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। सो अराउंड 23,000, 22,900, दैट इज वेयर वी कैन लुक एट सपोर्ट्स। अभी हम लोग क्विकली इंट्राडे चार्ट पर जाते हैं, एंड इंट्राडे चार्ट पर अगर मैं देखूं, आई आई चूज टू बैलेंस आउट ट्रेंड एंड नॉइज। अगर आप लोग हमारे वेबिनार्स देखते आ रहे हो तो आपको ये बात पता होगी। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, सो समवेयर लाइक 23,100, 23,070, ये जो है वो मेरा थोड़ा क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो फॉर द टाइम बीइंग आई वुड लुक एट समथिंग लाइक 23,300 एंड 23,400 एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। एंड बिफोर हेडिंग टू दैट लेवल, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर बनी है, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ ट्रेंड लाइन, एज इन जब मैं बोलूँ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ ट्रेंड लाइन मतलब देयर आर बीन whipsaws अराउंड here and all those things, but nonetheless वो लेवल जो वो लाइन जो है थोड़ी रेस्पेक्टेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो 23,300 के आसपास का जो लेवल है वो मेरे लिए फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू क्रूशियल होगा। Now I know that it's only 60-80 points away, but then वो level टूटेगा तो ही we might see the index head higher towards 23,400. Now let us take a look at the OI data, what the OI data is telling. So NSE India के website पर अगर मैं जाऊँ, I just type in NIFTY, just give me a second, and I click on option chain. Okay, ये मुझे आज के एक्सपायरी का डेटा देगा, एंड दैट इज समथिंग दैट आई वुड लुक एट फर्स्ट, एंड देन वील लुक एट व्हाट द नेक्स्ट एक्सपायरी इज आल्सो टेलिंग। सो एटीएम के आसपास एटीएम जो है वहाँ पर ऑब्वियसली एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। सो अगर आप देखोगे कॉल साइड में 23,300 में एक्टिविटी है, 23,250 में एक्टिविटी है, बट व्हाट वी हैव टू लुक फॉर इज लेवल्स दैट आर स्लाइटली फार्दर। So somewhere something like 23,400, 23,500, 23,600, वहाँ पर जो है OI काफ़ी मतलब ओपन इंटरेस्ट काफ़ी है, ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन जो है काफ़ी है। अगर आप सिंपली चेंज भी देखोगे तो समवेयर अराउंड 23,350 पर जो है OI चेंज इज द हाईएस्ट, वहाँ पर एडिशन है।
सेम वे 23,500 के आसपास, 23,400 वहां पर जो है वाई एक्यूमुलेशन है. सो ब्रॉडली द मार्केट इज लुकिंग एट 23,400, 23,350 एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस. एंड अगर उसके ऊपर भी जाएगा तो एवरी 100 पॉइंट्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब दैट इज लाइक द बिग फिगर. सो 23,350 एंड 23,400. सो राउंड फिगर जब भी होता है 23,400, 500, 600, यहाँ पर देर इज लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन when it comes to options. Sorry, call options. So broadly, I get a resistance of somewhere in between 23,400, 23,500. पुट साइड में अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली एटीएम के पास जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी. सो 23,200 से लेके 23,100, इवन 23,000 पर भी अगर आप देखोगे देर इज अ मैसिव वाई बिल्डअप. So downside में the zone of around 23,000 at the moment seems to be a level that people are looking at. People जब मैं बोलूँ I mean traders are looking at. We'll quickly take a look at what the next expiry is also telling. So अगर मैं 30th Jan की expiry देखूँ. So before we go ahead, you can also type in the live chat section कि आज market क्या लग रहा है. So you can just type that, okay, whether you are looking at into the bearish stage or bullish or into the sideways. Also do join us for the tomorrow session because tomorrow is very a big session on this market पे चर्चा with Dinesh Nagpal. He's a trader and investor and also a mentor. So it will be a fireside chat with Dinesh Nagpal tomorrow at 4 p.m. So you can like and subscribe the our YouTube channel so that you can get the notification for our upcoming session. All over to you, Karan, now. Yeah. So 30th Jan की expiry अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर भी the story is pretty similar. So if you see 23,400, 500, 600 पर there is write up, but massive there is OI accumulation, but massive every 500. So around that zone is what the traders are looking for resistance. पुट साइड में अगर मैं देखूं तो 23,000 नो डाउट हैज द हाईएस्ट ओआई बिकॉज वो साइकोलॉजिकल लेवल है. मारूबोजो कैंडल के आसपास जो कैंडल का जो लो था वो तकरीबन वो लेवल पर आता है. सो इट इज मोर ऑफ लाइक अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल सपोर्ट्स एंड मल्टीपल लेवल्स कमिंग इन टू एक्ट एज अ सपोर्ट, एज अ प्रोबेबल सपोर्ट. सो वहां पर अगर आप देखोगे तकरीबन 2.5 लाख से थोड़ा ज्यादा है ओआई एक्यूमुलेशन है. So broadly, the traders are looking at 23,400 and 23,000. So ये range हम लोग को पता चल गया है. Now चार्ट पर भी तकरीबन यही जोन हम लोग को दिख रहा था एंड एट द मोमेंट इंडेक्स जो है थोड़ा इंच कर रहा है. सो you can actually follow the trade recommendations that were there on the report. जो रोहित ने आपको थोड़े टाइम पहले दिखाया. सो यू कैन फॉलो दैट. एंड अगर आप देखोगे from the chart, from the OI, broadly we have gotten an idea as to what the market or what the participants are expecting. So now we'll quickly take a look at what the a few minutes back when I was preparing the mid-market report. So breadth जो था वो बहुत ज़्यादा skewed था more towards the bullish side. So sectors की अगर मैं बात करूँ 11 sectors gaining थे, but now it has come down to 8 gainers and 4 declines. But nonetheless, IT, media, realty, pharma, they were leading back then and अभी भी they are still in the lead. IT seems to be the biggest gainer today and तकरीबन 2.4% up is where we are seeing IT right now. Laggards में जो lender pack in general है they are taking a bit of a back seat today. So PSU banks, financial services, private banks, Nifty bank in general, they seem to be taking a bit of heat. But अगर आप losses का size भी अगर आप देखोगे it's not massive, but yeah, 0.3%, 0.2%, 0.2%, 0.2%. So somewhere in between 0.3 and 0.2% is the kind of loss that we are looking at in the lender space. स्टॉक स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं तो जस्ट गिव मी अ सेकंड. या स्टॉक स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं ब्रेथ कंटिन्यूज टू रिमेन बुलिश. तो 35 स्टॉक्स जो है दे आर एडवांसिंग and 14 15 they are declining and one is unchanged, but then consider कि वो थोड़ा borderline पे है because see it's going between unchanged and declines. So broadly market breadth थोड़ा bullish लग रहा है ये point पर. And which are the stocks that are actually gaining at this point of time? So we have of course हम लोगों ने sectors में भी देखा था कि IT pack जो है in general was moving higher. So something like Wipro, LTI, Mindchem, those are the stocks that are actually leading today and they have a gain of more than 2%.
वहीं पर अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी देखोगे तो समथिंग लाइक BPCL, Dr. Reddy, Hindustan Unilever at this point, they all seem to be taking a bit of beating. So that is on the sectors and the stock front. We'll do one thing. We'll quickly run through the bank Nifty chart also, and एक बार उसका भी OI देख लेते हैं as to what the traders are looking at, what are the probable supports and all those things. So bank Nifty में अगर आप देखो तो previous session में we kind of had like a buying tail pattern. अभी इसे मैं exactly buying tail नहीं बोलूँगा, but then because this is an index, so इसमें अगर आप देखोगे initial session में the index was trading lower and around 48,074, and then वहाँ से काफ़ी pull back आया and close जो था from the lows तकरीबन 700 points positive में हुआ. आज के दिन में बैंक निफ्टी इज अ बिट लैकलस्टर, इट सीम्स टू बी ऑन द बैक फुट टुडे. बट अगर मैं इंट्राडे चार्ट्स देखूं from the intraday level point of view, so the first resistance that I'll be looking at is somewhere around 49,100 to 49,300, and अगर उसके ऊपर भी continue हो रहा है then probably 49,700. And on the downside, मेजर जो रेड फ्लैग होगा वो दैट विल बी समवेयर अराउंड 48,200. Now we'll quickly take a look at what the OI data is telling, and I'll type in bank nifty. Go on to option chain. So we have run the poll, means in our YouTube channel, that what's your view on this today's Nifty 50 expiry, means whether you are thinking like it's a bullish, bearish, or it will be on the neutral stage. So we'll take a pause like for 30 seconds so that you can means like Put in your votes. yeah, you can put your votes there. Yeah. So as you guys type in, I'm going to quickly dig into what the OI data for Bank Nifty, and it's a monthly contract, so that is telling. So अगर मैं इसमें देखूं तो there is a bit of writing, नहीं, I wouldn't say bit of writing, but quite a hefty writing somewhere around 49,000 and 48,500. अगर आप क्यूमुलेटिव करोगे उसके वो रेंज का, इट्स क्वाइट अ बिग फिगर. सो वो जोन में इज प्रोबेबली वेयर द इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू टेक रेजिस्टेंस. एंड ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखोगे ऑन द पुट साइड, so massive accumulation is seen in 48,500, and next was 48,000. So range अगर आप देखोगे for bank nifty is much higher, is what I can see. And if you look at the charts, 48,000 is the recent swing low on the index, slightly below 48,000, but we can round it off to 48,000 because big figure है. And ऊपर में देखोगे recent swing high जो था इसका was around 49,500. So 49,500 पे if you observe, there are also multiple touch point levels जहाँ से that has acted as a polarity level, कि मतलब वहाँ पे touch होते ही the index continues to move, index bounces off that level. So that becomes a bit crucial. So 49,500 49,700 का zone जो है ऊपर में it is expected to act as a resistance. And as we are getting close to running out of time, I'll quickly run you through what are the stocks that are actually gaining and losing in the bank nifty. So market breadth is a bit balanced, and at the moment अगर आप देखोगे massive gain, losers अगर मुझे बोलना है then it would be AU Bank, SBI, Kotak Bank, HDFC Bank. वहीं पर उसके सामने समथिंग लाइक इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, ICICI बैंक, दे आर गेनिंग, एंड गेन्स जो है दे आर मोर देन 0.3%.
So Karan, if you can showcase about like the RSI level followed by the moving average for the today's Nifty 50 एक 15 मिनट के चार्ट में क्या हम लोग देख सकते हैं एक्सपायरी पे. Sure. So meanwhile, if anyone have any queries, then they can put in the chat box. So our research analyst is here, like to help you with the solutions. Yeah. So अगर first I would take a look at the 75-minute chart. So 75-minute chart में अगर आप देखो तो it is RSI since the past couple of sessions has been oscillating between 25 and somewhere around 55. So अभी अगर आप देखोगे we are heading towards that 55 zone. So अगर ये 55 का जो zone है वो टूट जाता है then we might I'm not telling we might see a range shift in the RSI. So matlab then it will start oscillating probably between the overbought level and 55 या 50 zone. But there is another interesting thing here. So अगर आप if you just compare the lows that was formed on 13th of Jan and कल का जो low था, and if you just compare the RSI, there is a bit of analysis based on chart patterns and all those things also. Analysis based on chart patterns and all those things also. And another thing is the index is actually heading closer to 23,300 जो zone हम लोगों ने कुछ समय पहले डिस्कस किया था. So that's it from our side. We'll open up the floor for Q&A. We'll be here for another 1 minute or so, and then we can call it a day. Also, the budget is on 1st of Feb, and we have already done the session on pre-budget analysis. So do watch. Means for your knowledge, that is about like the pre-budget and the stocks recommended there. So you can find that links in our this YouTube channel about like the pre that links in our this YouTube channel about like the pre-budget expectations. So with this, we like to end our session here, and thank you so much, Karan, for giving such a great insight. And thanks to all participants for attending the today's session. Also, do note that we are having the tomorrow important session that's on Market Pe Charcha, and that's a fireside chat between the Akshay Chinchalkar and Dinesh Nagpal. So Akshay Chinchalkar is the head of research, and Dinesh Nagpal is a trader, investor, and mentor. So do join us for that session that is at tomorrow at 4 p.m. So thank you so much all, and thank you to Karan for giving such a great insight. Thank you. Thank you guys for joining in, and I hope you trade safe.